Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. In our previous class, we explored the work of canonical British authors like Joseph Conrad, but today we shift our focus to a powerful Indian voice, a writer who transformed personal pain into social awakening and whose words became a weapon against centuries of oppression. So today we'll study Omprakash Valmiki ji and his life, major works and literary style. So if you find this lecture insightful, then don't forget to like this video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more detailed and exam oriented sessions on English and Indian literature. So Om Prakash Valmiki ji, he was born in 1915 and died in 2013. So he was one of the most influential Dalit writers and activists in India. He was born in Barla, a small village in Muzaffarnagar district, Uttar Pradesh. Om Prakash Valmiki belonged to the Valmiki community, a Dalit caste traditionally engaged in sanitation work. His life, right from childhood, was marked by humiliation, discrimination, and exclusion. He was denied access to education, made to sit separately in school, and even forced to sweep classrooms and school grounds. Yet Valmiki refused to remain silent. His life became a testimony of resilience, and through his writings, he exposed the harsh realities of caste based oppression in Indian society. His most famous autobiography, Joothan, which was published in 1997, became a landmark in Dalit literature. And this work is comparable to the significance of the diary of Anne Frank in world literature. So he passed away in 2013, but his words continue to echo in the discourse of social justice, equality, and dignity. सो इनकी ऑटोबायोग्राफी को कंपेयर किया गया है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विच वॉज रिटन बाय एन फ्रैंक इन वर्ल्ड लिटरेचर. तो ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. सो लेट्स टॉक अबाउट हिज मेजर वर्क्स. As we know that Valmiki ji wrote across genres like autobiography, poetry, short stories, and essays, and each of his works carries a strong voice of resistance and identity. So first we will talk about Joothan. It's in our syllabus as well. Joothan is his autobiography. It was first published in 1997, and it is one of the most powerful autobiographical narratives in Hindi literature. The title Joothan means leftover food. जूठन का मतलब होता है बचा कुचा खाना, किसी का बचा हुआ खाना. So the leftover food, symbolizing the humiliating practice where Dalits were expected to eat the remnants of upper caste households. So this autobiography exposes the brutal reality of casteism, social inequality, and the emotional trauma of untouchability. He does not write as a victim, but as a conscious rebel who demands justice and recognition of Dalit humanity. His second important work is Bas Bahut Ho Chuka. It's a Hindi poetry collection. This collection of poems expresses the anger, pain, and protest of the Dalit community. The tone is direct and unapologetic. Valmiki uses poetry as a form of resistance. He challenges not only caste oppression but also the hypocrisy of the so called civilized society. The third work is Sadiyon Ka Santaap. It's a poetry. It is another important poetry collection which literally means agony of centuries. सदियों का संताप. एग्नी का मतलब होता है पेन, दुख. सो सेंचुरीज का जो एग्नी है, सेंचुरीज का, सदियों का जो संताप है.
So it captures the inherent sufferings of Dalits across generations. Omprakash Valmiki's poetry combines emotional intensity with social realism, blending personal voice with collective memory. The fourth is Safai Devta. So this is the collection of essays and reflections. In this work, Om Prakash Valmiki glorifies the dignity of labor and the humanity of sanitation workers, so who are often despised by the upper caste. So he interprets Safai Devta, it means sanitation god, as a symbol of moral purity and courage. The fifth work, which is very important, Dalit Sahitya ka Saundarya Shastra, it means aesthetics of Dalit literature. It's a critical work that defines the philosophical and aesthetic foundation of Dalit literature. Valmiki argues that the beauty of Dalit writing lies not in ornamental language but in truth, experience, and resistance. So these are all major works written by Om Prakash Valmiki ji. Now we'll talk about his literary style and aesthetic vision. So, Om Prakash Valmiki's literary style is rooted in realism, simplicity, and emotional truth. He avoids decorative or complex language because his aim is not to impress but to express. So, the first literary style and aesthetic vision of Om Prakash Valmiki is autobiographical realism. So, Valmiki's writing emerged from lived experience. He does not fictionalize oppression, he documents it. His realism exposes the violence of caste through the lens of personal narrative and social critique. The second is protest and resistance. So every line in his work is a protest against against humiliation, social justice, and silence. His poetry, his prose reflect a voice of collective anger that transforms into a call for dignity and self-respect. There is a use of everyday language. So Valmiki writes in simple Hindi, often using colloquial expressions to stay true to the voice of the marginalized. This gives his writing authenticity and accessibility, especially among readers from oppressed backgrounds. The fourth is emotional and ethical appeal. So Valmiki's works evoke empathy rather than pity. He forces the readers to confront uncomfortable truths and questions the moral foundation of caste-based discrimination. The fifth point is aesthetics of truth. So unlike classical aesthetics that celebrate beauty or imagination, but Valmiki's aesthetic lies in truth, in social consciousness. For him, the beautiful in art is not what pleases the sense, but what is beautiful, which awakens the mind and stirs consciousness. So वाल्मीकि जी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है. So we'll talk about his contribution and legacy. He gave a new language to Dalit experience. He made it a legitimate part of Indian literary discourse. His writings helped to establish Dalit literature as a movement, not merely a genre, right? And his life itself became a symbol of resistance, from a schoolboy sweeping floors to a nationally respected author and activist. So, through Joothan and his poetry, he redefined the meaning of self respect, identity, and human dignity. So, we can say that Om Prakash Valmiki ji was not just a writer, he was a witness of truth, a voice. He was a voice of the voiceless. His life and literature remind us that art must not merely entertain, but it must awaken society's consciousness. His words continue to echo through classrooms, streets, and movements for justice.
affirming that writing can be an act of revolution. So this is all about his life, his biography, major works, and literary style, right? So, in the next topic is the text Joothan, a Dalit's life, which is in our syllabus. So, this is a text, this is an autobiography that changed the landscape of Indian autobiographical writing, right? So Joothan, a Dalit's life was first published in Hindi. It was actually written in Hindi. ये जो जूठन है किताब, ये ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले हिंदी में ही लिखी थी, जिन्हें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था. उसके बाद इसका ट्रांसलेशन अरुण प्रभा मुखर्जी ने किया. So the actual Hindi version of the actual book Joothan was published in 1997. जूठन एक दलित की आत्मकथा, मतलब इस बुक का एक्चुअल जो टाइटल है वो है जूठन, एक दलित की आत्मकथा, एंड विच लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण प्रभा मुखर्जी इन 2003. तो जो टेक्स्ट आपके सिलेबस में है वो इंग्लिश वर्जन है, ट्रांसलेटेड है, और वो 2003 में पब्लिश हुआ था, राइट? So it is regarded as a landmark in Dalit autobiographical literature, comparable to the works of B.R. Ambedkar and Sharan Kumar Limbale in its emotional intensity and social relevance. The term झूठन का मतलब क्या होता है? It literally means leftovers or the scraps of food. It symbolizes, झूठन actually symbolizing the humiliation of Dalits who were often made to eat discarded food from the upper caste households. वो जो अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग जब खाना खा लेते थे, तो जो उनके घर का खाना बचता था, उनकी प्लेट्स में, उनके बर्तनों में जो खाना बचता था, वो दलित्स को दिया जाता था, वही उनको खाना पड़ता था. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन ओनली, कि आप किसी इंसान को बिल्कुल जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हो. सो through this metaphor, Valmiki ji captures the centuries of old social, physical, and psychological exploitation of Dalits in Indian society. This autobiography, Joothan, a Dalit's life, traces Valmiki's journey from a childhood of humiliation in a small village in Uttar Pradesh to his eventual rise as an educated, self respecting writer and activist. It's not just a personal story. वैसे ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो एक तरह की पर्सनल स्टोरी भी होती है, बट दिस इज़ नॉट जस्ट अ पर्सनल स्टोरी, इट्स अ कलेक्टिव हिस्ट्री ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी written from the margins but meant for the conscience of the nation. So let's discuss the plot summary. The plot summary of the autobiography Joothan. So the plot of Joothan follows a chronological autobiographical narrative, but it reads more like a living document of caste oppression and resistance. So the first part is early life and social humiliation. So Omprakash Valmiki begins the autobiography Joothan, a Dalit's life, by describing his childhood in the village of Barla, where his community, Valmikis, lived in extreme poverty and social isolation, right? So his family's job was cleaning toilets and disposing of dead animals, and task considered polluting. तो जो इनकी फैमिली का जो काम था वो था कि टॉयलेट्स को साफ़ करना, डेड एनिमल्स को डिस्पोज करना. तो दिस टास्क कंसीडर्ड पॉल्यूटिंग, राइट? सो इवन एज अ यंग बॉय, ओम प्रकाश वाल्मीकि विटनेस्ड द क्रुएलिटी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो जब वो बहुत छोटे बच्चे थे वो तब से ये चीज़ें देख रहे थे कि किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की क्रुएलिटी सर पर बिल्कुल चढ़ के बैठी थी, और ये आज भी है. आप खुद सोचिए कि आपके घरों के आसपास जो भी, या जो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जो आपके पब्लिक टॉयलेट्स को जो क्लीन करते हैं, आप उन्हें कितना रिस्पेक्ट देते हैं, या जो आपके एरिया में जो आपका गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं, आप उन्हें कितनी
रिस्पेक्ट देते हैं। क्या आप कभी अगर लोग ऐसे भी हैं जो अगर उनसे टच हो जाएं तो नहाने चले जाते हैं। आज की 2025 में भी लोग इतना बुरी तरह से ट्रीट करते हैं इस कम्युनिटी को आज भी। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, जब ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी तो उस समय तो और ज़्यादा था। आज भी उतना ही है वैसे देखा जाए तो। कुछ चीज़ें बदल गई हैं लेकिन अभी भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन बाकी है जो आपके और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि तो बचपन से ही ये सब देख रहे थे। Even as a young boy, Valmiki witnessed the cruelty of caste discrimination in school. In his own school, he was forced to sit separately, often on the floor, and he was not allowed to touch pots or books handled by the upper caste children. At one point, the teacher orders him to sweep the school compound every day. Simply, why? Because he is Dalit. He belongs to the community who sweeps actually. तो टीचर को भी यही लगा कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये स्टूडेंट है तो क्या हुआ, करवा देते हैं इससे ग्राउंड साफ। तो बहुत ही नॉर्मल वे में उन्होंने उस बच्चे को कह दिया, जो बहुत छोटी उम्र का यंग बच्चा था, बहुत ही कम एज का बच्चा था, उसको कह दिया कि तुम रोज़ स्कूल का कंपाउंड क्लीन करना, वहाँ उस पर स्वीप करना उसको। सो दिस मार्क हिज फर्स्ट डीप वूंड, the realization that his worth determined his worth in the eyes of society. तो बचपन से इनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन इनकी फैमिली के लिए भी इन्होंने देखा। और जब इनके खुद के टीचर ने इनको बोला कि तुम जाकर ये कंपाउंड को रोज़ क्लीन करो, तब इनको बहुत ज़्यादा फील हुआ कि इनकी कम्युनिटी के लिए कितना डिसरिस्पेक्ट है लोगों के मन में, कि जिस स्कूल में ये स्टूडेंट की तरह जाते हैं उसी स्कूल में इनको एक काम दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिटी, राइट। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। फैमिली स्ट्रगल्स एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। सो हिज पेरेंट्स, पर्टिकुलरली हिज फादर, प्ले अ सेंट्रल रोल in his moral awakening. His father's act of defiance when he confronts the school authorities and demand his son's right to study becomes a turning point. So Valmiki begins to see education as a path to liberation. So despite financial difficulties, his family's determination keeps him going. He describes the constant hunger in his autobiography. He describes the constant hunger, the lack of clothing, and the social invisibility his family endured, right. The third part is education and awakening. So when Valmiki moves to junior high school, things improve slightly, but the discrimination continues. He writes about being insulted by teachers. He was mocked he writes about being insulted by teachers, mocked by classmates, and excluded from group activities. However, he also meets a few empathetic teachers and friends who motivate him. His exposure to progressive literature and Dalit thinkers, especially Ambedkar, strengthens his resolve to resist injustice. तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर ने भी इनको अम्बेडकर ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, इनको इनकरेज किया कि ये पढ़ाई करें। और मतलब इनका जो रिजॉल्व था टू रेजिस्ट इनजस्टिस, इसको स्ट्रेंथ किया अम्बेडकर को ये पढ़ते थे। तो उन्होंने, अगर आप भी अम्बेडकर को पढ़ेंगे किसी दिन तो आपकी भी जो आपका जो माइंडसेट है अगेंस्ट ऑप्रेशन और ये सब आपका भी काफ़ी इम्प्रूव होगा, पढ़कर देखिए एक बार। सो एजुकेशन बिकम्स हिज वेपन अगेंस्ट कास्ट हायरार्की एंड राइटिंग बिकम्स हिज फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट कास्टिज़म, अगेंस्ट दलित ऑपरेशन। लेकिन ऐसे नहीं कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो लड़ाई करके किया, या इन्होंने कहीं पर इन्होंने मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा किया। इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू प्रोटेस्ट किया, और ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रोटेस्ट होता है। Next point, encounter with urban casteism. So after completing his education, Valmiki takes up employment, but caste discrimination follows him even to cities. He experiences subtle forms of exclusion from colleagues
who refused to share food to superior when question his when who questions his background. So he always experienced certain forms of exclusion, चाहे कलीग्स हो या उनके सुपीरियर हो, कोई भी उनको मतलब क्वेश्चन तो पूछता ही था उनके बैकग्राउंड के लिए। कलीग्स उनको जब उनको पता चलता था उनके कास्ट के बारे में, तो कलीग्स उनके साथ फूड शेयर करने से रिफ्यूज़ करते थे, और जो सुपीरियर्स थे वो इनके बैकग्राउंड को क्वेश्चन करते थे। सो दिस प्रूव दैट कास्ट इज़ नॉट कन्फाइंड टू विलेजेस बट इट परसिस्ट इन अर्बन एंड एजुकेटेड स्पेसेस एज वेल, राइट। सो जैसे जैसे ये शहर की तरफ जाने लगे, क्योंकि इनकी जो अर्ली इनकी एजुकेशन हुई थी वो तो इनके विलेज में हुई थी, लेकिन जैसे आगे की पढ़ाई के लिए जब शहर गए तो चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव तो हुई, लेकिन चीज़ें बदली नहीं देखा जाए तो। मतलब शहर में भी इनको कास्टिज्म फेस करना पड़ा, राइट। सो फिफ्थ पॉइंट इज rise as a writer and social activist. So Valmiki begins to express his pain through poetry and essays. His writings are initially ignored, but his writings were initially ignored, but he gradually gained recognition as a Dalit voice of truth and resistance. In the final chapters of the book, he reflects on his journey from humiliation to dignity, which concludes that freedom comes not through acceptance but through assertion. So, this autobiography ends not in bitterness but in hope, a belief that literature and awareness can bring social transformation. वैसे इस प्लॉट में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर जो लेकिन हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पर कलेक्ट किया है। बाकी अगर आप इस टेक्स्ट का एक्चुअल जस्ट चाहते हैं कि आपको मिले, मतलब एक्चुअल फ्रूट अगर आप पाना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इस टेक्स्ट को पर्सनली पढ़िए। मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो ये टेक्स्ट है इसका लिंक को अपलोड करने की कोशिश करूँगी अगर मुझे मिल जाएगा तो। अदरवाइज़ आपके पास अगर है, आप बुक परचेज़ कर सकते हैं अगर, ये तो बहुत अच्छी बात है, या आपको गूगल पर कहीं पर मिल जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़िएगा ज़रूर। एक बार इसको थोरोली रीड करिए इस ऑटोबायोग्राफी को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी। अदरवाइज़ ये जो 5 मैंने जो ये सेक्शंस में मैंने जो ये इस ऑटोबायोग्राफी को डिवाइड किया है, ये काफ़ी मतलब आपकी समझ के लिए काफ़ी अच्छा है। सो नाउ let's talk about the characters, the main characters of the novel, of the autobiography. The Although Joothan is autobiographical, but it presents several memorable figures who shape Omprakash Valmiki's journey. The first character is Omprakash Valmiki himself. He is the narrator of the autobiography and the protagonist as well. तो ये इस कहानी के हीरो भी हैं और ये नरेटर भी हैं. So he is the central figure and the narrator. He represents both the individual and the collective Dalit experience. आप इस ऑटोबायोग्राफी को जो पढ़ेंगे तो आप ये इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इनकी खुद की कहानी है, खुद की कहानी तो ये है, लेकिन अगर आप इसको उस तरीके से भी पढ़ें जिसमें आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की के मीडियम से आप एक पूरी कम्युनिटी की जो कंडीशन है, जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, आप उसको भी फील कर सकते हैं. सो हेयर ओम प्रकाश वाल्मीकि represents both the individual as well as the collective Dalit experience. His journey from oppression to empowerment embodies the spirit of resistance. The second character is Valmiki's father. He is a man of dignity and courage who refuses to accept humiliation. It was his father who talked to the school authorities, and he fought against, he protested against द ह्यूमिलेशन फॉर जो भी टीचर्स जो थे वो उनको जो ह्यूमिलेट कर रहे थे, उनसे ग्राउंड साफ करवा रहे थे, उसके अगेंस्ट भी वो उनके फादर ही थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, जो अगेंस्ट खड़े हो गए थे, और उन्होंने ही आस्क्ड फॉर हिज सन्स राइट फॉर एजुकेशन. सो ही इज़ अ मैन
of dignity and courage, or courage who refuses. He was very courageous. He refused to accept humiliation. His confrontation with the school authorities become symbolic of Dalit assertion and self-respect. यहीं से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली कि वो अब कभी भी किसी भी तरह का ऑपरेशन को नहीं सहेंगे. Valmiki's mother, she is a silent sufferer yet emotionally strong. Emotion was strong थी, बट एक तो ये दलित थी, ऊपर से ये महिला थी. तो महिला दलित तो वैसे भी डबल ऑप्रेस्ड होती है. देखिए, दलित जो मेल होता है ना, वो सिंगल ऑप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ कास्टिज्म भी होता है. लेकिन जो दलित महिला होती है ना, वो डबल ऑप्रेस्ड होती है. एक तो वो दलित होती है, ऊपर से वो महिला होती है, तो डबल ऑपरेशन होता है. तो शायद इसी वजह से, और उनको कभी स्कूल भी नहीं भेजा गया होगा. ओम प्रकाश वाल्मीकि जी तो इसलिए स्कूल भी जा रहे थे क्योंकि वो लड़के थे, लेकिन इनकी मदर तो शायद कभी स्कूल भी नहीं गई होंगी, और घर में ही रहती होंगी. तो शी इज़ अ साइलेंट सफरर येट बट शी इज़ इमोशनली स्ट्रॉन्ग. इनका भी कॉन्स्टेंट स्ट्रगल था कि ये अपनी फैमिली को फीड कराएं, प्रोटेक्ट करें अपनी फैमिली को. दैट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दलित वुमेनहुड. लेकिन फिर भी, मतलब साइलेंट सफरर थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ये खड़ी रही, और मतलब अपनी फैमिली की काफ़ी प्रोटेक्शन में ऊपर तक काफ़ी प्रोटेक्ट करके रहती थी ये, खासकर अपने बच्चों को. और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए. हिज स्कूल टीचर्स एंड क्लासमेट्स. सो जो इनके स्कूल टीचर्स और क्लासमेट्स थे, दे रिप्रेजेंट अपर कास्ट हिपोक्रेसी एंड प्रेजुडिस. इनकी जो क्रुएलिटी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है इस ऑटोबायोग्राफी में. एंड दिस क्रुएलिटी हाईलाइट्स द स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. जैसे इनके क्लासमेट्स भी इनके साथ कभी भी मिंगल नहीं होते थे, कभी भी इनको साथ अपने साथ मतलब इनके साथ किसी भी एक्टिविटी में इनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे अपने साथ. इनको बहुत ही आइसोलेटेड फील कराते थे, एलिनेटेड फील कराते थे, क्योंकि वो ये उनकी कास्ट के नहीं थे. और यहाँ इनके टीचर्स भी ऐसे ही थे. जैसे एक टीचर ने इनको कंपाउंड साफ़ करने के लिए बोल दिया था कि डेली आकर सुबह कंपाउंड साफ़ करना. तो इनके टीचर्स, इनकी क्लासमेट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंट करते हैं अपर कास्ट हिपोक्रेसी को और प्रेजुडिस को. अगले करेक्टर्स हैं सपोर्टिव फिगर्स. अब देखिए, कुछ टीचर्स इनके बहुत ही मतलब इनका एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि ये दलित थे ना, इसलिए. कुछ क्लासमेट्स भी ऐसे थे इनके, लेकिन फिर भी बहुत सारे इनके टीचर्स थे उसी सेम स्कूल में. बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे इनके दोस्त थे, जो कि जिन्होंने एक्चुअली रिकॉग्नाइज़ किया था वाल्मीकि टैलेंट एंड ह्यूमैनिटी. और ये उन्हीं का ही सपोर्ट था कि मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया. मैं सारे टीचर्स की बात नहीं करूँगी कि सारे टीचर्स ही ऐसे थे. वाल्मीकि जी को आगे आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिले, ऐसे बहुत सारे क्लासमेट्स मिले, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने इनके एक्चुअल टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया. उन्हें ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने उनको काफ़ी इनकरेज किया. उनको ऐसे बच्चे उनकी क्लास में मिले, ऐसे फ्रेंड्स उनको मिले जिन्होंने एक्चुअली उनको encourage किया. So they symbolize the hope of social change through empathy and education. तो ये जो सपोर्टिव फिगर्स हैं, ये होप थे वाल्मीकि जी की लाइफ में, राइट. अब बात करते हैं थीम्स की. सो द फर्स्ट थीम इज कास्ट ऑपरेशन एंड सोशल इनजस्टिस. So this is the central theme of Joothan, and it is the systematic cruelty of caste and how it destroys the dignity of individuals. So Valmiki ji exposes the how the caste system creates economic, educational, and emotional slavery. Right. Second is education as liberation. So education becomes the key to resistance in Valmiki's life. It represents empowerment and breaking of social chains, identity and self-respect. So Valmiki's journey is one of self-realization, from internalized shame to proud assertion of Dalit identity. He rejects the notion of inferiority imposed by others. Poverty and labor. So the narrative highlights the intersection of caste and class and showing how poverty perpetuates social inequality. Protest and resistance.
So the act of writing itself becomes a form of rebellion, a form of protest. So Joothan is not written to evoke pity. Joothan कोई दया पाने के लिए नहीं लिखी गई थी, और ये है भी नहीं. ये यहाँ जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमें दिखे हैं वो कोई विक्टिम नहीं दिखे हैं, बल्कि वो तो एक एक्टिविस्ट के तौर पे हमें दिखे हैं. सो Joothan is not written to evoke pity, but it is written to awaken consciousness and demand justice. He demanded justice in his autobiography कि हमें जस्टिस चाहिए. उन्होंने किसी तरह की कोई दया दिखाने के लिए नहीं लिखी है ये ऑटोबायोग्राफी. चलिए सिंबल्स की बात करते हैं. सिंबल्स एंड इमेजरी. द फर्स्ट इज झूठन. सो झूठन का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया था, लेफ्ट ओवर. सो द मोस्ट पावरफुल सिंबल है ये इस बुक का. दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल सिंबल इन द बुक. This symbol, Joothan, represents humiliation, deprivation, and the dehumanization of Dalits. But as the narrative progresses, it transforms into a symbol of resistance, a rejection of shame, right? Broom and cleaning work. So this is a symbol of caste, assigned labor, and forced servitude. Yet Valmiki defined is as dignified work when done with self-respect. तो यहाँ पर वाल्मीकि जी बताते हैं इस ऑटोबायोग्राफी में कि ब्रूम और क्लीनिंग वर्क को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से एसोसिएट कर देना ठीक बात नहीं है. ऑल्दो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. अगर सपोज़ मान लीजिए आपके एरिया में जो भी इंसान सफाई करने आता है, अगर वो एक दिन भी नहीं आए या 2 दिन नहीं आए, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी. उस गंदगी से सब जगह एटमॉस्फेयर भी गंदा हो जाएगा. उस गंदे एटमॉस्फेयर में आप बीमार हो जाएंगे, और बीमार जब आप हो जाएंगे तो आप ठीक भी नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जो लोग जिनको आप रेस्पेक्ट नहीं देते, जिन्हें आप अपने बराबर नहीं समझते, क्यों? क्योंकि वो आपकी गंदगी को साफ़ कर रहे हैं, इसलिए आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. तो ये कितना बेवकूफ़ी वाली बात है वैसे देखा जाए तो, कि आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं. देखिए डॉक्टर तो आपको तब बचाएगा जब आप बीमार हो जाएंगे, जब आप ऑलरेडी सफ़र कर चुके होंगे. हम एक बार में तो डॉक्टर के पास नहीं चले जाते ना. हमें फ़ीवर भी होता है तो हम थोड़ा दिन रुकते हैं, थोड़े घंटे हम रुकते हैं. हम जब ठीक नहीं होते तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. या अगर हमें थोड़ा सा भी, अगर हमें स्टमक में पेन है या हेडेक है, तो थोड़ा हमें जब ज़्यादा होता है तब हम जाते हैं. अगर हमें कम पेन होता है तो हम उसे सफ़र कर रहे होते हैं. तो डॉक्टर तो हमारी हेल्प तब करते हैं जब हम थोड़ा सा सफ़र कर चुके होते हैं और जब हम पेन में होते हैं. लेकिन जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है या जो भी लोग हैं जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, हमें तो बल्कि उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, बल्कि हम उन्हीं को ही रिस्पेक्ट नहीं करते. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे घर में जो हाउस हेल्प्स आती हैं, ऑल्दो बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बट ऐसे कुछ लोग आज भी हैं जो उनको ही रिस्पेक्ट नहीं करते. अगर वो हाउस हेल्प एक दिन आपके घर नहीं आए तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके खुद के काम रुक जाएंगे. समझ रहे हैं मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपके हाउस हेल्प एक दिन छुट्टी ले लें तो आपके खुद के काम रुक जाएंगे, क्योंकि आपके खुद के काम उनके कामों पर डिपेंड है, और आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. आपके एरिया में जो स्वीपर हैं, जो टॉयलेट क्लीनर्स हैं, जो भी लोग हैं जो आपके एरिया में जो सफाई का सारा काम करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते. अगर वो आपको गलती से टच कर लें तो आप खुद को पोल्यूटेड मान लेते हैं. उनकी अगर सुबह सुबह उनकी शक्ल आप देख लेते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हमारा तो दिन ख़राब हो गया, हमने एक स्वीपर की शक्ल देख ली. अगर इस तरह की आप सोच रखते हैं तो आप बहुत पिछड़े हुए हैं. तो आप उस इंसान को पॉल्यूटेड समझ रहे हैं जो आपको बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बचा रहा है. आपको तो उनका थैंकफुल होना चाहिए. आप उनको सिर्फ एक थैंक यू से भी उनका एहसान नहीं उतार सकते. और ये इतना ग्रैटिट्यूड दिखाने की जगह आप क्या कर रहे हैं? उनको आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं. सो दिस symbols of broom and cleaning work, of caste assigned labor and forced servitude. तो वाल्मीकि जी ने भी ये कहा है, और सब मेरा भी यही मानना है कि ये जो काम है ये बहुत डिग्निफाइड वर्क है. अगर ये नहीं होगा ना तो दुनिया के सारे बड़े काम अटक जाएंगे, नहीं हो पाएंगे. राइट. सो द थर्ड सिंबल इज स्कूल.
So symbol of schools, the school as a symbol is of both होप एंड ह्यूमिलिएशन. तो वाल्मीकि जी की लाइफ में स्कूल उनके लिए होप भी है और स्कूल उनके लिए ह्यूमिलिएशन भी है. होप इसलिए क्योंकि वहाँ जाकर ही वो आगे बढ़ पाए, और ह्यूमिलिएशन इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ. वहाँ के कुछ टीचर्स ने, कुछ उनके क्लासमेट्स ने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया. तो इसलिए स्कूल उनके लिए सिंबल है होप का भी और ह्यूमिलिएशन का भी. दिस इज़ द प्लेस वेयर वाल्मीकि फेसेस एक्सक्लूजन बट ऑल्सो फाइंड्स अ पाथ टू एम्पावरमेंट. जैसे मैंने बोला ना आपको कि हाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन ये वही जगह थे जहाँ उनका एम्पावरमेंट भी हुआ. द फोर्थ सिंबल इज़ फूड. So, food symbolizes social boundaries and purity, pollution, taboos, right? So, and refusal to share food reflects caste segregation in daily life. देखिए फूड जो होता है ना, इसको इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ क्यों दी गई है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी को अपना फूड शेयर करते हैं तो हम उसके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप होती है. जैसे आपकी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं या चलिए 50 बच्चे पढ़ते हैं, आप 50 के साथ तो फूड शेयर नहीं करते ना. आप जिसके साथ फूड शेयर करते हैं वही आपका धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही फूड शेयर करते हैं. तो इनके जो क्लासमेट्स थे इनके साथ फूड शेयर नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि वो इन्हें पॉल्यूटेड मानते थे, इनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे. सो फूड symbolizes social boundaries. Food symbolizes purity, pollution, taboos, right? And refusal to share food reflects caste segregation in daily life, right? सो इसकी लिटरेरी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इस टेक्स्ट की. झूठन, क्योंकि इसके बड़े सारे रीज़न हैं. झूठन इज़ एक्चुअली वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट powerful Dalit autobiographies in Hindi literature. It helped to establish Dalit life writing as a major literary genre. This book redefines aesthetics, like beauty is not in style or fantasy but in truth and encourage. ये बुक बहुत ज़्यादा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने का कि जो आपने एक वर्ड सुना होगा एस्थेटिक्स. तो एस्थेटिक्स जो है, ब्यूटी जो है वो सिर्फ स्टाइल में नहीं है, ब्यूटी तो ट्रुथ में है, करेज में है. एंड वाल्मीकि's रियलिस्टिक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोज ब्रोक द elitist mold of हिंदी राइटिंग, राइट? और जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ विच वॉज डन बाय अरुण प्रभा मुखर्जी. अरुण प्रभा मुखर्जी इंट्रोड्यूस्ड दलित डिस्कोर्स टू द ग्लोबल अकेडमी कम्युनिटी. तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ इसका, तो इसे ग्लोबल अकेडमी कम्युनिटी में भी इसको जगह मिली. सो टुडे झूठन इज स्टडीड नॉट only as a personal narrative but as a socio-political document that challenges India's moral consciousness. And that is why Delhi University has added this text in the syllabus of English honors, right? So now we have explored Joothan, a Dalit's life by Omprakash Valmiki, a text that transformed autobiography into activism. It's not just a story of an individual but an entire community struggle for dignity. So चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं. नाउ विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देयर आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज that is based on this text Joothan, a Dalit's life, and this will helping you to approach with both emotional and analytical understanding, right? So we'll discuss uh, some questions one by one. The first question is, how does Omprakash Valmiki's Joothan reflect on the role of education in imbuing Dalits with agency? So you can begin your answer with an introduction. इसमें आप लिख सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि's Joothan is not just an autobiography but it's a political and social document that redefines how we view education, identity and empowerment in a caste-based society. So through his life story, Joothan, Valmiki demonstrates how
education becomes a radical tool for Dalits to reclaim dignity, questions oppression, and challenge the centuries old social order that has denied them knowledge and equality. So the narrative powerfully explores the transformative potential of education, how literacy and awareness become acts of resistance in a society where ignorance was used as an instrument of control. So you can add some of the points like education is a site of struggle. So Valmiki's school experience reflects that for Dalits, education is never a neutral or equal space. He was made to sit separately from upper caste students, often outside the classroom, symbolizing how the caste hierarchy intruded even into supposedly modern institutions. The humiliation he faced from his teachers and peers, especially being made to sweep the school courtyard, it reveals how education becomes a terrain for both oppression and resistance. So, despite these indignities, Valmiki's desire to learn never extinguishes, marking the beginning of agency through perseverance. There's a line in the autobiography. The village's entire life was based on untouchability and caste discrimination. The humiliation I suffered, they're scared for me for life, but it also became my motivation. So this line expresses that education thus becomes both a symbol of pain and a weapon of empowerment, right? Secondly, education as a means of self realization. So, for Valmiki, literacy means more than acquiring degrees, it means discovering one's voice and identity. By learning to read and write, he enters the realm of discourse from which Dalits had been had long been excluded. So education gives him the language to name injustice, to write Joothan, and to articulate the collective pain of his community. So through this, Valmiki becomes a conscious intellectual, moving from being a victim to a voice of resistance. So shift this shift marks the evolution of agency from passive suffering to active articulation, right? The third point is resistance through. So by learning of to read and write, he enters the realm of discourse. Through this, Valmiki becomes a conscious intellectual and moving from being a victim to a voice of resistance. Third point is resistance through knowledge. So in Joothan, Valmiki realizes that true education is not limited to institutional learning, it is the awareness of social realities and the courage to confront them. He uses education as a tool to question the hypocrisy of the so called educated upper caste who continue to practice discrimination. His knowledge allows him to critique mainstream literature and aesthetics which have historically ignored Dalit realities. So, his own narratives, um, by writing his own narrative, Omprakash Valmiki rewrites history from the margins, proving that education can reverse hierarchies of knowledge. So, thus, education transforms from a means of assimilation into a means of rebellion. The fourth point is education and agency in the urban space.
So when Valmiki moves to cities like Dehradun and Bombay, education seems to open doors, yet caste continues to shadow him. Even among the educated elites, he encounters subtle forms of exclusion. However, his education gives him the critical consciousness to identify and expose this hypocrisy, showing how education gives Dalits agency to see and resist oppression even in disguised forms. Hence, while caste follows him, education arms him with the tools to resist it. Fifth point, education as a collective liberation. So, Valmiki's story transcends personal struggle, it symbolizes the collective aspiration of Dalit for dignity and self respect. His success as a writer and a thinker inspires future generations, proving that education can dismantle internalized inferiority. The autobiography thus becomes a didactic text, encouraging readers to view education not merely as a social mobility but as a means of social transformation. So in Joothan, Omprakash Valmiki presents education as both a burden and a blessing, a path fraught with humiliation, yet the only route to liberation. For Dalits, education is not handed down, it is earned through resistance. It empowers them to speak truth to power, redefine aesthetics, and assert their rightful place in human community. Thus, Joothan becomes a manifesto of educational emancipation where learning equals agency and literacy equals freedom. So, to write a good answer, you need to begin with contextual introduction, Dalit literature plus autobiography. You can use textual references, just example for you can use school incidents, writing as liberation. You need to highlight education as agency and the social resistance, and conclude your answer with a philosophical reflection, education as liberation and identity, right? Now the second question is, critically examine the title of the Joothan. तो आपको यहाँ पे जो टाइटल जो है नॉवेल का जूठन, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको एग्जामिन करना है. So the title Joothan literally means leftovers and food scraps. It holds profound symbolic, cultural and political significance in Omprakash Valmiki's autobiography. It encapsulates the core experience of humiliation and exclusion that the Dalit community has historically endured in caste-ridden Indian society. But beyond its literal meaning, Joothan becomes a metaphor of resistance, reclaiming what was once a symbol of shame and turning it into powerful statement of identity and protest. Thus, the title is not merely descriptive; it's deeply allegorical, representing the historical burden of untouchability and the journey from degradation to dignity. Right. The first point you can add, that is literal meaning. Literal meaning of the title is a reflection of caste realities. So the word Jhudan refers to the leftover food from the plates of upper caste Hindus, which the Dalits, especially the Valmiki community, were forced to eat due to social exclusion. So this act was not voluntary but institutionalized degradation, reinforcing caste hierarchy and untouchability. So Valmiki recalls how his mother would collect Jhutan from upper caste. His mother would collect Joothan from upper caste household during feast, clean it and feed the family. यहाँ पर आपको एक इस नॉवल में एक लाइन भी मिल जाएगी, वी एट द झूठन, ये वर्ड्स हैं नॉवल में. We ate the Joothan of others, lived in their discarded spaces, and wore their cast of clothes. So the repetition of such humiliating acts becomes the emblematic uh, of the dehumanization inherent in caste practices. So hence the title directly invokes
the painful social history of the community that lived on the remnants of the other's privilege. The symbolic meaning of the title is Joothan as a metaphor of subjugation. So, beyond the literal act, Joothan stands for the psychological and cultural leftovers that society imposed upon Dalits. The Dalits were denied access to education, property, temples, and basic dignity. They were given leftovers in every form. Maybe it can be economic, social, and intellectual. Thus Jhotan symbolizes systematic exclusion when even knowledge and aesthetic were reserved for the pure caste. So Valmiki's choice of title turns this word into a mirror of social hypocrisy, where the so-called civilized society is revealed to be spiritually impoverished. The third point is reclaiming the term from shame to assertion. So one of the most radical aspects of Valmiki's autobiography is how he reclaims Joothan, a term historically used to humiliate, and transformed it into a badge of honor. So by naming his life story Joothan, Omprakash Valmiki refused to hide his humiliation. Instead, he exposes it, turning private pain into political expression. So the title thus becomes a tool of linguistic resistance, subverting the language of oppression. It asserts that what was meant to silence Dalits will now speak their truth. So this act of reclamation mirrors the larger Dalit literary movement, which uses the language, narrative, and memory to invert hierarchies. Cultural and philosophical implications. So this title also critiques the Brahminical notion of purity and pollution. In Hindu caste ideology, jhutha, which can be polluted or touched food, is a remark of impurity. But for Valmiki, jhuthan represents the impurity of social conscience, and that allows one human to treat another as less than human. Thus, the title serves as a philosophical reversal. The jhuta is not the food touched by Dalits, but the morality of those who discriminate. So, Valmiki therefore moralizes the material, turning an act of defilement into a metaphor of moral awakening. The last point for this answer is the political dimension, Joothan as a protest literature. So by titling his autobiography Joothan, Valmiki situates his narrative within the tradition of Dalit protest literature. The title becomes a political statement, rejecting the upper caste aesthetics of purity, refinement, and detachment. It foregrounds raw, lived experience over idealized beauty, asserting that truth, not decorum, is the highest form of art. So, in this sense, the title itself embodies the Dalit aesthetics rooted in reality, rebellion, and moral courage. Thus, Joothan stands as an act of creative defiance, an assertion that the stories of the oppressed serve to be told in their own language. So the title Joothan carries the entire weight of Dalit history within a single word. It's at once a record of humiliation and a manifesto of pride, a metaphor of exclusion and declaration of agency. Through it, Om Prakash Valmiki transforms the transforms the refuse of society into a literary and moral revolution that provides a so-called leftover of history can in fact redefine its core. Hence the Joothan is not just a title, it is the essence of Dalit consciousness, a symbol of resistance and a reclaiming of human dignity uh, through the power of truth, right? Now the next question is, how does Joothan critique mainstream education, literature, and aesthetic? Discuss with close reference to the text. So, Om Prakash Valmiki's Joothan is not only a personal memoir but a social literary intervention. It dismantles the Brahminical foundations of education
literature and aesthetics which for centuries excluded Dalit voices and experience, right? So Valmiki exposes how mainstream institutions, whether academic or literary, have perpetuated caste hierarchies under the guise of culture and refinement. Through his lived experience, he redefines education as awareness, literature as truth, and aesthetics as ethics. So, thus, Joothan becomes a text that decolonizes and democratizes Indian thought by challenging who gets to define what is beautiful, educated, and civilized. So, the first point in this answer is critique of mainstream education. So, education in Joothan is portrayed as a site of both oppression and awakening. Valmiki's experience reveals that mainstream education in India has historically served as a mechanism of caste domination rather than liberation. As a child, Valmiki was made to sit outside the classroom and perform menial tasks like sweeping, which symbolizing the internalization of untouchability in academic institutions. Teachers and peers, instead of imparting equality, reinforced caste prejudice. So, the very curriculum he studied reflected upper caste values full of Sanskritized ideals, mythological purity, and elite moralism, completely detached from the Dalit realities. So, hence, Joothan exposes the hypocrisy of an education system and preaches preaches equality but practice exclusion. So Valmiki's ultimate realization is that true education lies not in institutional learning but in the awareness of injustice and courage to confront it. So through this critique, he transforms education into a political tool of consciousness rather than a social ornament. The second is critique of mainstream literature. Valmiki's Joothan also questions the literary canon that has long celebrated upper caste perspective while silencing marginalized voices. Mainstream Indian literature, dominated by the upper caste writers, portrayed the world through idealism, spiritualism, and moral purity, which ignores the reality of caste, hunger, and violence. So, Valmiki argues the classical and modern Indian literature often romanticizes poverty and suffering but never experienced it. By contrast, Joothan offers authentic, lived experience, turning autobiography into an act of resistance. So his writing directly challenges the aesthetics elitism that defined what counts as good or literary art. Through Joothan, Valmiki establishes that Dalit literature is not about beauty but about truth. It is not interested in pleasing the reader but in unsetting the consciousness. Thus, he redefines the function of literature from presenting imagination beauty to presenting what? To presenting truth, injustice, and human struggle. So, in this sense, Joothan inaugurates inaugurates a new aesthetic of protest, the Dalit aesthetics, which privileges experience, authenticity, and ethical engagement over ornamental style. The third part is critique of the mainstream aesthetics. So, the mainstream aesthetics in Indian literature have historically been shaped by Sanskritic notions of rasa. Rasas are emotions, dhwanis are suggestions, and alankaras are ornamentations. So, these concepts of rasa, dhwani, and alankara valued harmony, pleasure, and refinement, but they excluded pain, anger, and resistance. So, the emotional truths of Dalit existence, the pain, anger, and resistance are the emotional truths of Dalit existence. Valmiki, through Joothan, redefines aesthetics from the margins. The beauty of pain replaces the pleasure of harmony. Anger becomes a legitimate aesthetics emotion, challenging the idea that literature must soothe or elevate. The Dalit body and its suffering become central subjects of artistic expression.
Hence, Joothan asserts that the experience of oppression has its own aesthetics, one that is raw, moral, and transformative. Through this redefinition, Valmiki directly critiques Brahminical aesthetics, which sought to erase discomfort and idealize purity. The fourth point is in the intellectual subversion of the Brahminical order. So, Valmiki's education and writing both become acts of intellectual rebellion. He challenges the notion that knowledge and art belong to the upper caste by writing Joothan in Hindi, a language of both elite and subaltern India. He reclaims linguistic space for Dalits in the national literary discourse. So his autobiography thus functions as a countertext to the Bhakti tradition where Dalits were tolerated only as devotees, not thinkers, to Sanskritic literature, which sanctified hierarchy, and add to modern Indian writing, which often ignored caste under the veil of universalism. In doing so, Joothan liberates aesthetics from hierarchy and literature from silence. The last point of for this answer is from aesthetic purity to ethical realism. So Valmiki replaces the upper caste obsession with purity and beauty with an ethic of realism and justice. For him, beauty without justice is immoral. Hence, Newton embodies an ethical aesthetics where the truth telling becomes the highest form of artistic beauty. He teaches us that art is not about how refined the language is, but how honest the voice is. In this moral reorientation lies Valmiki's greatest aesthetic contribution. Through Joothan, Omprakash Valmiki redefines the foundation of Indian knowledge and art. He exposes how mainstream education alienates, how canonical literature silences, and how traditional aesthetics beautifies oppression. Against all this he erects a new vision, one where education awakens, literature speaks truth, and aesthetics becomes ethical. So Valmiki thus transforms his autobiography into a revolutionary cultural critique. He does not merely write his story. Actually, he rewrites Indian intellectual history from the perspective of those who were never allowed to speak. So, in essence, Joothan is both a personal act of self liberation and a collective act of aesthetic emancipation, right? तो एक अच्छा आंसर लिखना है तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सक्लूजन से अपना आंसर शुरू करिए इन इंडियन एजुकेशन एंड आर्ट. उसके बाद कुछ टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स को यूज़ कीजिए लाइक द स्कूल स्वीपिंग इंसिडेंट एंड वाल्मीकि's राइटिंग जर्नी. फिर उसके बाद जो आपको ब्राह्मणिकल एस्थेटिक्स टू दलित रियलिज्म जो है उसको थोड़ा सा आपको डिस्कस करना है एंड एंड योर आंसर विथ फिलोसफिकल आइडिया दैट आर्ट विदाउट जस्टिस इज इनकम्प्लीट, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Critically investigates Om Prakash Valmiki's Joothan as a Dalit Bildungsroman. So the term Bildungsroman, what does it mean? It is derived from German language meaning a novel of education or formation. तो जूठन को एक दलित बिल्डिंग्स रोमन कहा जाता है, मतलब एक ऐसी नॉवेल जो एजुकेट करने के लिए लिखी गई है, फॉर्मेशन के लिए लिखी गई है. सो तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन दलित बिल्डिंग्स रोमन कैसे है. सो ट्रेडिशनली इट रेफर्स टू अ नरेटिव that traces a protagonist's psychological and moral growth from childhood to maturity, such as Wilhelm Mister's apprenticeship और डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड. अगर आपने चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड पढ़ा है तो आपको थोड़ा पता होगा, वो भी इसी टाइप का एक नॉवल है. So, however, Joothan redefines this classical genre through the lens of Dalit experience. Om Prakash Valmiki's autobiography is not merely about individual growth, it's about the awakening of Dalit consciousness in a world structured by caste hierarchy. Hence,
It becomes a Dalit Bildungsroman, a story of self realization not through privilege and freedom, but through struggle, humiliation, and resistance. So, Valmiki's life trajectory from a child sweeping the schoolyard to a recognized writer and social thinker, symbolizing the collective journey of Dalits from silence to assertion. So, the first point is redefining the idea of education. So, in a conventional Western Roman, education leads to intellectual and moral refinement. In Joothan, however, education begins with exclusion and humiliation. Valmiki's school experience. Valmiki's school experience shows how learning is never neutral for Dalits, right? And his teachers makes him sweep the entire school, symbolizing how caste determines even the right to knowledge. The pain of discrimination becomes his first lesson in social reality. Yet despite such cruelty, Valmiki pursues turning education into the means of empowerment, not assimilation. His literacy allows him to name his oppression and ultimately write his story, giving voice to the voiceless. Thus, education becomes the foundation of Dalit consciousness and the first stage of his बिल्डिंग बिल्डिंग का मतलब होता है बिल्डिंग इसका मतलब होता है सेल्फ फॉर्मेशन. The second point is from individual pain to collective identity. So, in traditional Bildungsroman, the protagonist's journey is individual and inward. But in Joothan, Valmiki's growth is inseparable from the collective struggle to of his community. The autobiography constantly shifts between I and we. शुरू में I यूज़ हुआ है लेकिन बाद में constantly shift हो गया, we में convert हो गया. So that indicates that his story mirrors that of every Dalit child born into this systematic oppression. His mother's humiliation, collecting Joothan from upper caste households, becomes a formative memory that fuels his moral anger and political awareness. His sense of self is thus shaped not by isolation but by collective suffering and solidarity. So, thus, transformation from individual victimhood to communal voice marks Jotun as a collective Bildungsroman. The role of resistance in agency. So, the journey of self development in Jotun is marked by resistance rather than acceptance. Unlike the Western Bildungsroman, where the hero harmonizes with society, Valmiki's growth is achieved by rejecting society's norms. His refusal to accept caste based roles shows the emergence of agency, right? By pursuing education and later by writing his autobiography, he defines the destiny imposed by caste. His resistance transforms humiliation into moral power, an act of spiritual self formation that is deeply political. So, here Joothan presents a counter Bildungsroman where maturity is achieved through dissent rather than conformity. The fourth point is writing as the final stage of building. So in Jotan, Valmiki's act of writing representation represents the culmination of his growth. He does not simply narrate events. He reclaims authorship, the very act from which Dalits were historically excluded. By documenting his experience, he transforms suffering into history, silence into speech, and memory into resistance. So his autobiography becomes a pedagogical text educating readers about the realities of caste and social injustice. Through writing, Valmiki achieves not just literacy but the self realization, the ultimate goal of the Bildungsroman form. The Joothan reimagines the process of formation as one where language becomes liberation. The urban experience and continuity of caste, right? So the Bildungsroman often ends with reconciliation. The hero finds his place in society, but Valmiki's story refuses closure. There is no closure because क्योंकि उनको पता था कि ये जो और उनको पता है, मतलब उस समय भी पता था उनको कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म अभी हुआ ही नहीं है और इसको ख़त्म होने में शायद पता नहीं कितने साल लग जाएंगे.
तो जो जनरली जो बिल्डिंग्स रोमन होता है उसमें एक क्लोजर होता है, एक रिकन्सिलिएशन होता है कि जो कैरेक्टर है उसको उसका डेस्टिनेशन मिल गया, उसकी लाइफ की सारे हर्डल्स ख़त्म हो गए, सारी प्रॉब्लम सारी टेंशन ख़त्म हो गई, एक हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि वाल्मीकि की स्टोरी जो है वो उनके ऑपरेशन के बारे में है, और ये ऑपरेशन कोई 1-2 साल का नहीं है, हज़ारों साल पुराना है। और इतना पढ़ने के बाद भी उन्हें ये ऑपरेशन देखना पड़ा, उनके जैसे कई लोगों को देखना पड़ा। तो उन्हें पता है कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हिज स्टोरी रिफ्यूज़ेस क्लोजर। या आप मेंशन करिएगा अपने आंसर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। सो even in urban modern setting like Bombay, caste follows him। मतलब मॉडर्न सेटिंग में भी कास्ट चली गई, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भी पीछे पीछे कास्ट भी आ गई। सो डिस्पाइट हिज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ही फेसेस सटल डिस्क्रिमिनेशन, रिवीलिंग दैट modernity has not erased caste, only disguised it. Yet this awareness itself marks his maturity. He sees the system for what it is and learns to resist it intellectually. So, despite his education and employment, he faces subtle discrimination, revealing the modernity has not erased caste, only disguised it. तो यहाँ उनके इनकी इस ऑटोबायोग्राफी से हमें पता चलता है कि उनके लेटर ईयर्स में जब वो एजुकेट हो गए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया अच्छा खासा, उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन अभी सटल फॉर्म में हुआ। तो ये रिवील करता है कि मॉडर्निटी जो आई है, मॉडर्न मॉडर्न जो एरा शुरू हुआ है, उसमें कास्ट इरेज नहीं हुई है, बल्कि छुप गई है, डिस्गाइज्ड हो गई है। येट दिस अवेयरनेस इटसेल्फ मार्क्स हिज मेच्योरिटी। ही सीज द सिस्टम फॉर व्हाट इट इज and learns to resist it intellectually. So in this way, Valmiki's growth is philosophical and political, not social or material. The sixth point is Joothan as a Dalit Bildungsroman, a new literary paradigm. So Joothan redefines what it means to grow in literature. Growth is not moving upward in class, but in outward in consciousness. Knowledge does not reconcile with society but questions its morality. The protagonist does not assimilate but awakens. So this gives rise to the concept of a Dalit Bildungsroman, where the journey from ignorance to awareness is both individual and collective. Growth means moving from subjugation to self-assertion. The end is not harmony but ongoing resistance. Hence, Joothan becomes both a personal memoir and a socio-political document that redefines the very structure of the Bildungsroman. So Omprakash Valmiki's Joothan expands a classical idea of Bildungsroman into a radical and collective act of becoming. His growth does not lie in worldly success but in spiritual and ideological emancipation. Through education, resistance, and writing, Valmiki attains maturity as a Dalit intellectual, transforming his suffering into social critique. So, in this sense, Joothan stands as the first major Dalit Bildungsroman in Hindi literature, a narrative of awakening where the self's journey mirrors the community's struggle for dignity. It's a story not of reconciliation but of revolution, where self realization equals social awakening, personal growth equals and personal growth equals political assertion. So, being the last answer, I must say always begin your answer। क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कोई भी क्या हो, क्वेश्चन को पहले समझिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। अब आपने देखा, अच्छा ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, अच्छा ठीक है आपने समरी लिख दिया, यहाँ पर हो जाता है सब कुछ गलत। तो स्टूडेंट्स को तो ज़्यादातर लगता है ना कि हमने तो पेपर पूरा किया था, इतना सारा लिखा था, स्टिल हमें हमें मार्क्स कम मिले या इतने भी नहीं मिले कि पास हो जाते। तो उसका आंसर सिर्फ यही है कि सिर्फ की वर्ड्स को पहचान के आंसर नहीं लिखना है। हर क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो की वर्ड्स को पहचान लेते हैं। तो जो की वर्ड्स को पहचान लेते हैं तो फिर
प्रॉब्लम हो जाती है। वो सिर्फ वही लिखाते हैं जो उन्होंने जनरल वे में पढ़ा होता है। इफ़ यू वांट टू राइट a good and effective answer, you need to do something which is not comfortable actually. You need to begin with the definition. जैसे इसी क्वेश्चन की बात हम करें, अगर यही क्वेश्चन लिखना है, so you need to begin your answer with the definition of building instrument, कि ये होता क्या है। पहले तो आपको ये बताना है, एंड उसके बाद you need to show how Valmiki reinterprets it through the Dalit lens, and then support your answer with the key points with textual examples जैसे कि school incident, mothers humiliation, urban discrimination, act of writing। ये सारा आप बहुत अच्छे से explain करेंगे, एंड ये सारे ही पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ लिखे इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद you need to conclude your answer with the idea of transformation consciousness, not mere education। सो ये सारा लिख लेंगे तब आपको जाकर कहीं जाकर आपको 60, 70, 80% आपको मिल जाएगा। सो ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई एम हैप्पी कि हमने कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने इनकी लाइफ, इनका मेजर वर्क और डिस्टिंक्टिव लिटरेरी स्टाइल को पढ़ा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इन टुडेस लेक्चर वी एक्सप्लोर्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि, हिज लाइफ, his major works and distinctive literary style. We understand how his personal experiences shaped his voice as one of the most powerful representatives of Dalit literature. उसके बाद हमने इनका जो टेक्स्ट है वो पढ़ा, जूटन अ दालिट्स लाइफ। This is his remarkable autobiography. In this, we have discussed its introduction, background, detailed plot summary, major characters, themes, central themes, symbols and imagery. उसके बाद हमने symbols and imagery पढ़ा, और उसके बाद हमने literary importance पढ़ा. Through this, we saw how Valmiki transformed his lived pain into a text of resistance and empowerment. Finally, we moved on to the previous year questions and began our answer writing strategies, where we analyzed in detail the 4 questions. Yes, these 4 questions बहुत सारे थे मेरे पास, लेकिन it's very hard for me to discuss each and every previous year questions. तो मैंने सिर्फ 4 या 5 कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जो मुझे बेस्ट लगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो गई थी। वैसे मैंने 6 सेलेक्ट किए थे, पर क्लास बहुत बड़ी हो गई थी तो मैंने 4 ही डिस्कस किए हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ डिस्कस नहीं हुआ है, तो यू कैन राइट द क्वेश्चन देयर। I can give guidance to you to write the answer for that particular question in the comment section. So हमने यहाँ पर पूरा समझा कि कैसे आंसर्स को लिखना है। So यहाँ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। In upcoming lectures we'll continue with more with a new topic, और हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर इंसाइटफुल, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more detailed authentic literature classes, right? Thank you so much for being here. Good night.